This conference will now be recorded. ठीक है, तो एक बार आज के टॉपिक नोट कर लेते हैं। आज क्या करेंगे? ठीक है जी। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय oops object oriented programming? Object oriented programming. There are some of the concept of oops like inheritance, polymorphism, encapsulation, right? एक मिनट, Abstraction. हाँ जी, एक मिनट रुकना। हाँ जी, abstraction and class and object. So these are the object oriented programming concept, and Java support object oriented programming, right? Java support what is inheritance? What is inheritance? Inheritance means acquiring the properties of parent class to the child class. That is inheritance, right? पेरेंट की प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? Good morning, Deep. गुड मॉर्निंग। चाइल्ड की, राइट? चाइल्ड की। What is the benefit of inheritance? What is the benefit of inheritance? With the help of child class object, we can call the parent variable and parent method, right? Parent variable and parent method. For example, we have one class, we have another class. Extend is the keyword used for inheritance. Which keyword is used for inheritance? Extend. Extend. This is class 1, this is class 2. Class 1 is the here, it will work as a parent class, and it will work as a child class, right? Which is a parent class? Class 1. Class 1. Class 1. Class 1. And which is the child class? Class 2. Class 2. Class 2. Class 2. Class 2, right? Class 2 is the child Child class. class. Child class. Now, let me create a new class from scratch. For example, here we have a class Maruti. Inside Maruti class, we have a method. Here I'm printing a message, right? Inside Maruti class, what we have? We have a method. We have another method, right?
How many variables and method we have created? One variable, One variable, two methods. One variable, two method. Right, and here Default. I'm going to create new class, other class Swift. Which keyword is used for inheritance, Pavan? Extends. 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 Which keyword is used for inheritance? Extend. extends. Right, extends. Now Swift extends Maruti. So what is Maruti here? Parent class. Child class. Maruti parent class. Parent. Maruti is the Parent parent class Parent and class. Swift is the The Child child class. class. Child Child class. class. child class. Child class. Inside child class we have a method model Swift. Now what is the benefit of inheritance? Mute कर लो please. पवन mute कर लेना, आवाज है बहुत. What is the benefit of inheritance? We can use parent class Child methods. class can inherit properties of methods and variable of parent class. With the help of child class object, what we can do? Parent variable and method. We call the Parent method. parent variable and parent method. We can call the Parent variable. Parent Parent variable and parent method. parent variable and parent method. So here in the child class, I have created the main method and I'm going to create the object of which class? This is the object of which class? Child class. Child class. Now, with the help of this object, what we can do? We can call the base model. That is the method of which class? Parent. Parent. Parent class. And base price. This is the method of Parent class. Parent. and model. This is the method of Child class. Child. Child. child class. ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਟਾਈਮ म्यूट मैं कर कर लेना दूं। ऋषि भाई. ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪੂਨਮ ਇੱਥੇ ਨੀ ਲਾਇਆ ऋषि भाई म्यूट कर लेना. हाँ जी. OB dot price. This is the variable of which class? Parent class. parent class. Parent class. Now you can print as well. Right? Save the class. We didn't save the class Maruti class. Save it. Control S. Now go to the Swift class. We are able to call yes or no? Hmm. You can execute. Yes sir. Right? Which type of inheritance is this? Single level inheritance. Single level. इस कौन सा इनहेरिटेंस है सर ये? एक बार This और is- एक्सप्लेन कर देंगे. हाँ मैं करता हूँ. एक बार म्यूट कर लो प्लीज सब लोग. पीछे से ना आवाज बहुत ज्यादा है आज. सब लोग म्यूट रखो प्लीज. Here we have created a class Maruti. Inside Maruti class we have created two methods and one variable. We have created another class Swift that is extending the Maruti class. Inside Swift class we have a method, right? And here we have created the object of Swift class, that is our child class. With the help of this object we are able to call the parent method, child method and parent variable, right? हाँ जी, क्लियर है सबको? अब मेथड कौन सी क्लास में होगा? Yes, sir. चाइल्ड में ही Yes, sir. ऑलवेज क्या कह रहे हो? मेन मेथड होगा वो ऑलवेज चाइल्ड क्लास में ही होगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. द क्लास which you want to run, again वही बात आती है. The class which you want to run, you will create the main method in that class. ठीक है जी. अब
सर वन मोर थिंग, क्या हम पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास का नहीं कर ऑब्जेक्ट सकते, बना सकते नहीं हैं? कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। You can't call the child method from the parent class, right? एक बार बेस का पर्पस एक्सप्लेन कर देंगे? इसका बेस का, बेस, हाँ। this is the parent class. Here we have created two methods, base price, base model. Here I'm printing a message, here also I'm printing a message. Now in the child class, this is fifth class, this is child class. Here we have created one more method, right? And here I'm creating the object of child class. With the help of this object, I'm able to call the parent method and child method. Clear? क्लियर। तो वन क्वेश्चन, तो जो हमारा जो हमने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में पेरेंट की, उसमें हम कंस्ट्रक्टर्स भी यूज कर सकते हैं अभी आएगा पेरेंट पिक्चर का। में, अभी आएगा पिक्चर में, आएगा पिक्चर में भी आएगा। Here we have created one class, another class, third class. So this is which type of inheritance? Multi-level. Which type of inheritance is this? Multi-level. Class 1, class 2, class 3. Grandfather, father and child, right? Hanji, which keyword is used for inheritance? Extend. Extends. Extends. Now, with the help of class 3 object, what we can do? We can We can inherit call properties of class 1 and class class 2 one both. methods and variables. Hanji, Class 3 with can the help of inherit properties of class 1 and class 2. yes. So it means with the help of class 3 object, what we can do? We can call the class 2 variable and Methods and method, variables of class class 1. 2 and Yes. Let me show. For example, remove the main method from here. Now I'm going to create one more class. Right? Now Maruti is the Grandfather. mother, Oh, grandfather. right? And Swift is the Father. parent, father, Parent, father, and Swift VDI is the Child. child, child. child, child. now with the help of Swift VDI, what we can do? What we can do? We can call We the can call which method? methods and Grandfather and father. Grandfather and father method. Yes, yes. So S dot method 3. Method 3 is the method of which class? child class. Child class. Good one. You guys can see one thing here. After colon, mute kar lo please. After colon, whatever is written, that is the written type of that method. कोलन के बाद जो चीज लिखी होती है, आफ्टर कोलन whatever is written, that is the written type of that method. After hyphen, please mute रखो यार. Whatever is written, that means
that method belong to that That class. class. ठीक है, एक बार मैं दिखाता हूँ. Base model. Base model is the method of which class? Kunal? Maruti class. Maruti class. Grandfather. Yes, Maruti. grandfather Maruti class. And what is the return type of this method? Void. 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 Mira, things are clear? Yes, Deep. Yes. Base price is the method of which class? Grandfather class. Maruti. Maruti class. And model? Swift. 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 And price? Maruti. Yes. So which type of inheritance is this? Multi-level inheritance. Multi-level. Multi-level. Third one is the hierarchical. One parent, one father having multiple son. That is which type of inheritance? Hierarchy. Hierarchical. 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 Is there any difference between multi-level and multiple inheritance? Multiple is the different inheritance. Multiple अभी डिस्कस नहीं करा, वो आगे आएगा. ठीक है, वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग है. Son one, or we can say child one, and second one is child two. With the help of child one object, what we can do? Call methods and variables of father class. Father. Yes, father class, variable plus method, and Call कर child one class, variable plus method. But there is no relationship between child one Child and one. Child two. child two. So with the help of child two, what we can do? We can same. We can call Methods and variables. father and child to class. Father and itself. Yes, Child to. child two. But there is no relationship between Child one one and and Child one and child two. child one and child two. Now let me show. ठीक है जी. Let me create. For example, let me create Swift VDIs new class. Swift Desire. Now Swift Desire will extend the which class? Swift class. Right? Swift is not extending anyone. This is parent class, and Swift VDI is the Child one. child one. Good one. And Swift Desire? Child two. Child two. Child two. Now inside child two we have a method one. Inside Swift VDI we have a method 3. Right? With the help of Swift VDI object, what we can do? You can call the parent. Yes. Methods and variable. What is the name of the parent method? Model. Swift. Model. Right? You can check here. Model. Right? Yes. Good one.
right? In the Swift VDI, you can see we are able to call the model method, that is the method of Swift class, and we are able to call the method 3. Right now you can run it. Other class method, child class method. In the same way, in Swift desire, what we can call? What we can call? Parent. Parent Methods and this. method and variable. Right? Make sense? Which type of inheritance is this? हाँ जी, कौन सा inheritance है? Radical. Hierarchical. Hierarchical. Right? Hierarchical. Now, there is another inheritance that we will discuss later. दीपक भाई, हाँ हाँ वन क्वेश्चन है इसमें। हम्म, जैसे जो चाइल्ड 2 है उसमें हम चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बना के उससे हम अभी चाइल्ड 1 अभी के और अभी पेरेंट के कर अभी सकते हैं अभी एक्सेस? अभी 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 1 मिनट रुको भाई, अभी आऊंगा। आप उसके बारे में बात कर रहे हो, हैज रिलेशनशिप के बारे में, अभी लूंगा, आगे लूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। सर इसमें हमें दोनों क्लास में मेन मेथड बनाने पड़ गए ना, दोनों चाइल्ड में। Again, what I have written here, the class which you want to run, you will create the main method in that class. आपको क्लास child 1 को रन करना है तो बनाओ उसमें। If you want to run child 2 also, then create main method in that as well. Right? राइट सर। हाँ जी, कोलन और हाइफन का सिनेरियो एक बारी आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे दोबारा? कौन सा? कोलन और हाइफन वाला। अच्छा हाँ, देखो, s dot method 1 कोलन के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर कोलन व्हाट इज रिटन हियर? अच्छा, रिटर्न टाइप ऑफ दैट मेथड। यस, एंड आफ्टर हाइफन? स्विफ्ट क्लास जिसका मेथड है ये। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। द क्लास नेम टू विच दिस मेथड बिलोंग। राइट नाउ, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पेंडिंग हियर। हु इज मेंटेनिंग टॉपिक लिस्ट हियर? दिव्या, आप मेंटेन कर रहे हो, राइट? Right, you can mention multiple inheritance is pending. I will take later on. ओके। दीप्शिका, क्या क्वेश्चन है? वो अलग चीज है, वो अलग चीज अभी लूंगा, वो अलग चीज है जो आप पूछ रहे हो ना, वो अलग चीज है। अभी आता हूं उस पे। हैज ए वर्सेस इज ए रिलेशनशिप, देयर इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन। हैज ए वर्सेस हैज ए वर्सेस is a relationship. वर्सेस इज ए रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस मींस is a relationship. Has a relationship. Remember, we have discussed we can create the object of a class in the Another class. another class. We call it Has a relationship. has a relationship. चलो, अब एक चीज समझना, one class, another class. Here we have method 1, method 2, method 3, method 4. This is class 1, this is class 2. No inheritance here. क्या नहीं कर रखा हमने? There is no inheritance. No inheritance. Can I create the object of class 1 inside class 2? Yes.
Can we create? Yes. Right? Can we create the object of class 1 inside class 2? Which type of method I can call? Which type of method I can call? Edge. With the help of Edge. class 1 object, what I can call? We can call, what we can call? Yes or no? Yes, sir. कुणाल, Yes, right. है ना? हम क्लास 1 के ऑब्जेक्ट से कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं? Method 1 and method 2. Only method 1 and method 2, right? This concept is, we will call As a relationship. has a relationship. We will call it has a relationship. Now we have a class 1, we have another class 2. Extend. What we are doing here? Extend. Method 1, method 2. Class 1, class 2. Method 3, method 4 is a relationship. With the help of class 2 object, what we can do? We can only call method 1, method 2. No. Same. You can call all the No. methods in class 1. With the help of Class 1. class 2 object, but with the help of class 2 object, what we can do? Class 2 से सब Class 1 and class 2 We can method call and variables. method 1, All four methods. method 2, method 3 and method 4. 4. Right? class 1 पूछो. Right. So this difference is clear to everyone? Yes, sir. Can you please explain has a relationship? Yes, sir. Has a relationship डोली लास्ट सेशन में डिस्कस हुआ था. एक बार म्यूट कर लो प्लीज सब लोग. एक क्लास का ऑब्जेक्ट, इफ यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इन द अनदर क्लास, वी कॉल इट हैज द रिलेशनशिप. राइट? let me explain the things practically. Mute कर लो एक बार प्लीज सब लोग. Yes, possible. New class. Here I am going to create a class A. Right? Inside class A, we have method 1, I am class A method. We have I am now I'm going to create another class B. Inside class B, how many methods we have? I am class B method. Now we are not doing the inheritance. Inheritance नहीं कर रहे. If I want to call the class A method, what I will do? What I need to do? Pawan. ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास 1 का. बहुत अच्छे भाई. Class A object we have created, and we can call the method 1. Method 1, method 2. If I want to call the method 3 and method 4, what I need to do? सर तो क्रिएट इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सर फिर. बहुत बढ़िया भाई पवन, बहुत अच्छे. संदीप, things are clear? Yes, sir.
method 3, method 4. So this is concept. This concept is Has a relationship. has relationship. This example is clear to everyone? दीपक Yes, भाई sir. इसी में ही क्वेश्चन है, क्लास ए ने अगर एक्सटेंड किया हुआ मारुति क्लास को अभी तो ये अभी अभी क्लास बी आऊंगा में भाई, अभी आऊंगा। अब क्या क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर सेम पैकेज में है तो कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज का भी कर सकते नहीं हैं। कर सकते डिफरेंट पैकेज में भी करा था ये हमने। ओके। हाँ जी यश, क्या क्वेश्चन था यश? मेरा ये क्वेश्चन था सर कि ये क्लास ए अगर एक्सटेंड कर रही है मारुति क्लास हम्म, को, तो हम्म, उस केस में जो मारुति क्लास के जो हमारे जो ग्रैंडफादर क्लास है उसके मेथड से ये एक्सेस कर पाएगा ऑब्जेक्ट बना के? क्लास ए का कर पाएगा? नहीं, जैसे क्लास ए एक्सटेंड कर रही है मारुति को, हम्म, तो मारुति में जो मेथड है, सपोज करो मेथड ए और मेथड बी, वो इसके ऑब्जेक्ट बना के वो एक्सेस कर पाएगा क्योंकि वो उसको एक्सटेंड बिल्कुल कर रहा कर है पाएगा, क्लास ए। बिल्कुल कर पाएगा। ठीक। आप ये कुछ कह रहे हो, मारुति क्लास ए, क्लास बी हाँ इज जी, टोटली डिफरेंट, क्लास बी इज टोटली डिफरेंट, हाँ राइट? हाँ जी, दिस इज मारुति, हाँ जी, this is class B, this is class A. हाँ जी, Here you have created the object of class A. So with the help of हाँ जी, class A object, you can call only class A variable plus method. And हाँ जी, if मारुति you have created the object of class B, then you can call class B variable plus method plus Maruti variable plus method. हाँ जी। ठीक है ना? एक मिनट रुकना यार सब लोग। जी क्लियर है सबको? हाँ दीपक भाई, जैसे क्लास ए में क्लास बी का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास ए में हम कर सकते हैं ना एक्सेस, मतलब ये क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो यहाँ पे तो आप कर सकते हो। ठीक है, यू बस कैन यही कॉल क्वेश्चन था। क्लास बी वेरिएबल प्लस मेथड एंड मारुति वेरिएबल प्लस मेथड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? हैज रिलेशनशिप एग्जांपल? Yes, sir. यस सर। नाउ फॉर एग्जांपल हियर आई एम एक्सटेंडिंग द class A. Now with the help, is there any need to call the method 1 and method 2 by creating the object of class A? Do we need? No. No, sir. How we can call? How we can call? बाय क्लास बी डायरेक्टली कॉल। Any doubt now? This is the नो सर concept we call. What we will call this concept? Yeah. इज We अ will call रिलेशनशिप। is there Is there relationship? a relationship? Is there relationship? किसी का कोई डाउट? एक इसका स्क्रीनशॉट डालेगा कोई ग्रुप में? हैज अ रिलेशनशिप में, हेलो सर, हैज अ रिलेशनशिप में अगर मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास बी के एक्सेस करने की ट्राई करूंगा तो क्या नहीं वो करने एरर देगा ना, आएगा सर? एरर देगा। और इसी तरह जब इज रिलेशनशिप में इसमें इनहेरिटेंस में अगर मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करूंगा, मतलब जैसे हम क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ए के वेरिएबल एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो तब भी वो एरर वो देगा, करने राइट? देगा, करने देगा। करने देगा पर, हाँ करने देगा पर नीड नहीं। नीड नहीं है, बिल्कुल सही।
हाँ जी, this concept is clear to everyone. Please give confirmation in the chat box. Now, constructor with inheritance. हाँ जी, let me create a class. So I'm going to create a class. Class ABC. हाँ जी, Nikhil Rathi. What do you mean by constructor? Construction is same like method, no return type. It call itself when we create an object. Class name and construction name should be same. It is not return type. हाँ जी, Class name हाँ and जी, construction name should be same, sir. और इसके अलावा No return type. type. No No need return to type. no need No to return call. type. No need to Call call it the will Call call it call itself. itself. Create an object of the class in which class we have declared the constructor. So here we have created a constructor. Which type of constructor is this? Default. constructor. Default. Right. Now we have created which constructor? One parameter. Parameterized. One parameter. एक मिनट रुकना यार सब लोग ना, प्लीज एक मिनट देना मेरे को, म्यूट कर लो सब लोग प्लीज, एक मिनट देना, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट देना मेरे को। हाँ जी, so how many constructor we have created here? Two. 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 Now Two parameters. total constructor we have Three. Three.
right? 3 constructor we have created. Now mute kar lo please. We have another class. Right? How many constructor we have here? 3. 3. Right? Created the main method and created the object. Which constructor will be called? Default. Default. Child default const. Child default. Child default and Parent constructor is also calling. Right? If I'm passing one value, then see the output. Which constructor is calling again? Parent default constructor. If I'm passing two value, then Again, we have parent parent default default and child. Two parameterized. 2 parameterized. Every time parent default constructor is calling. Yes or no? yes sir. We call it. Yes sir. म्यूट कर लो प्लीज, एक बार ना म्यूट रखो सब लोग, आवाज बहुत ज्यादा आज. We call it implicit call. Which type of call is this? Implicit. Implicit call. If we want to call the parent parameterized constructor, then we will use super keyword. What is the use of super keyword? Super keyword is used for calling the what is the use of super keyword? Call parent parameterized Constructor. And super will be the first statement in the child class constructor, and we can't write more than one super keyword in the child class कंस्ट्रक्टर. क्या काम है सुपर कीवर्ड का संदीप? So to call the parent parameterized constructor. बिल्कुल Super सही. keyword is for calling the parent parameterized constructor. हाँ. From here control will go to which constructor? Control will go to where? child to parameterized. Child to parameterize, yes or no? बाकी लोग बताओ यार. Yes sir. Yes, sir. Control will go to which constructor? Child to parameterized. Child to parameterized. From child to parameterize, I want to call parent one parameterize. Which keyword I will write here? Super key. Super. It will call which constructor? Parent one parameter. Parent Parent one parameterized. One parameter. Now So see the super output. is like this keyword. This और super में difference होगा ना. This keyword is used for calling
from one constructor to another within same class. Within same class. I'm saying within same class. Super keyword is used for calling the parent Different. parameterized constructor. सुपर और दिस कीवर्ड एक साथ यूज नहीं कर सकते ना बिकॉज दे आर द फर्स्ट नहीं कर स्टेटमेंट. सकते. बिल्कुल सही. बहुत अच्छे डोली. We can't use this and super together inside a constructor. हाँ जी, आउटपुट क्या है देखना जरा. Parent 1 parameterized, child 2 parameterized. Any doubt, anyone? No, sir. Clear. Sir, If I'm passing no. two value. हाँ जी, एक मिनट रुकना अर्षित. It will call parent. 2 parameterized constructor. Two parameterized See the output. constructor. एक मिनट म्यूट रखना प्लीज सब लोग. म्यूट कर लो एक बार सब लोग. If we are not writing the super keyword, which constructor will be called? Parent Default. Parent Default default. constructor will be called always. This is which type of call? Implicit. Implicit call. Implicit. call. If we want to call the parent parameterized constructor, then we can use Super keyword. Super Super keyword. keyword. अब बताओ क्या डाउट है. सर रीजन क्या है इसका? पेरेंट डिफॉल्ट डिकॉल हो रहा हर बार. In each child constructor, हर बार नहीं हो रहा भाई. In each child constructor, super keyword is defined by the compiler, and that is calling the Parent default constructor. Parent default constructor. क्लियर हुआ. पेरेंट चाइल्ड के हर कंस्ट्रक्टर में कौन सा कीवर्ड डिफाइंड है? बोलो. Super default. Keyword is defined. Super keyword is defined. Now from here where control will go? 2 parameterized constructor. What will be the output? डिफॉल्ट एंड टू पैरामीटराइज्ड. बहुत अच्छे भाई. Default parameter. Default and child to parameterize. Now can anyone explain? हाँ जी. Parent, Parent one parameterized. Why parent one Child two parameterized we are saying? parameterized. Why parent one parameterized we are saying? Parent डिफॉल्ट और default. टू पैरामीटराइज्ड ही रहेगा सर. Parent default child one child two. यार ये भी तो देखो ना, child two से child one को भी तो कॉल करा है. Here we are calling the child one parameter. Child one parameter. एक्चुअली मैं सुपर के हिसाब से बोल गया सर. हाँ जी हाँ जी. Now see the output. Parent default child one and child two. ठीक है जी. अब म्यूट कर लो एक बार सब लोग. मेथड करूंगा आगे आएगा methods के लिए भी आएगा. Now assignment 1. Use this and super keyword. Output should be in the below sequence. Parent default constructor, parent two parameterized constructor, parent three parameterized constructor, parent one parameterized constructor, child
3 parameterized constructor, child 1 parameterized constructor, child 2 parameterized constructor, and child default constructor. असाइनमेंट क्लियर है सबको? दिस और सुपर कीवर्ड सर एक संग कैसे यूज करेंगे? आपने मना किया ना एक संग नहीं करोगे, एक साथ नहीं करोगे आप, लेकिन यूज देखो ना. इंटरनल कॉल, let's suppose if I want to call child default to child 2 parameter, which keyword I will use? सुपर कीवर्ड. By super keyword we are saying internal call. Keyword, sir. This. Sorry. This keyword. This. Something like that. Now from child to parent. Super. एक मिनट देना सब लोग. From parent 1 to parent 3, which keyword I will use? Internal call. This. This keyword. असाइनमेंट कर दिया मैंने आप लोगों को सोल्व. हाँ जी, क्लियर है सबको? क्लियर पवन भाई? यस सर. सर सुपर कीवर्ड मेथड में भी यूज हो सकता है, राइट? अभी आगे आएगा भाई, आगे लूंगा. अभी कंस्ट्रक्टर के केस में यूज करा. एक इसका स्क्रीनशॉट कोई डालेगा? कैन एनीवन प्लीज पुट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप? हाँ जी. नाउ असाइनमेंट नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस. किसी का डाउट असाइनमेंट को लेके? नो सर. हाँ जी. चलो जी, एक बार ना दिव्या कौशिक वेरिएबल के बारे में एक बार एक्सप्लेन करो. So variable can store a value and it can be changed. It can be changed. Global variable and local variable. Global variable is defined in a class and can be accessed in a whole class, and local variable is defined in a method and its scope is limited to that method. बहुत अच्छे. In the whole class, और यहाँ पे local variable. It is defined in a method and in the method its scope is and can be limited used. to Yes. that method. हाँ जी, क्लियर हो गया पवन? यही डाउट था? जी सर. असाइनमेंट 2 का भी एक कोई हाँ जी प्लीज. सर हम अगर ग्लोबल वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है मेन मेथड में, तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ना? स्टैटिक नहीं कर सकते. हाँ जी बिल्कुल, वो आगे आएगा पिक्चर में. you can use static keywords. हाँ यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल वी कैन कॉल इट. नहीं, विदाउट, अगर हम रेफरेंस वेरिएबल भी करेंगे आगे आएगा पिक्चर में, आगे आएगा. कुछ लिमिटेशन होती है, आगे बताऊंगा. मेन मेथड स्टैटिक टू स्टैटिक देयर आर सम लिमिटेशन. ओके. हाँ जी, किसी का कोई और डाउट? वी कांट यूज द. हाँ जी, सेम कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते. ठीक है, तो इतना ही रख रहा हूं आज. अच्छा, नोट्स सबके पास है ना? जावा के नोट्स जो थे सबके पास है ना? एवरीवन हैविंग द जावा नोट्स? Yes. You guys can ping me if you don't have the Java Selenium notes.
Right? These are the notes which we have followed. सर मेरे पास नहीं है सर अभिषेक। पिंक कर लेना मेरे को, मैं दे दूंगा। आई विल शेयर। ओके सर। ठीक है, तो आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग इन द ड्राइव। नेक्स्ट सेशन से पहले अपना सब कुछ फिनिश कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पेस वाइज वी आर गुड टू गो, चीजें आराम से चल रही हैं। ठीक है, जल्दी फिनिश नहीं करनी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, you. बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। Thank you, sir. ओके जी, बाय। थैंक यू सर। ओके जी, बाय।